हेलो स्टूडेंट्स ऑन दी चैनल टॉक मैथ्स। महेश्वरी सर एक बार फिर आपके सामने हैं। आज हम सेकंड चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर अपना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट चैप्टर में रिलेशंस और फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, उनके इनवर्स फंक्शंस के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज एंड उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आवर सेकंड चैप्टर इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि f is a function a to b such that fx equal to y. Then we can define a function that is from b to a. G is another function b to a with the condition that f is bijective. Function is 1 1 and on 2 means range of this function equal to codomain. When range equal to codomain, then function is bijection. We define G B to A such that x equal to G of y. Then this is inverse of f. ये सारा डिटेल से हम पढ़ चुके फर्स्ट चैप्टर में कि फंक्शन और उसका इनवर्स। इसके साथ एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट जो यहाँ काम भी आएगी वो जानी थी हमने कि इफ वी फाइंड f of f इनवर्स देन वी गेट आइडेंटिटी फंक्शन, दैट इज इन टर्म्स ऑफ y. f of f इनवर्स वी गेट y. ऑल्सो f इनवर्स ऑफ f दैट इज ऑल्सो आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ y, identity in terms of x. When we get fx equal to x, that is an identity function. So to a function to inverse exists only when the function is bijective. अब इसी फंक्शन पे ये फंक्शन है, ये बाइजेक्टिव है, इसका इनवर्स. अब इसी फंक्शन से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की. एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास. Suppose y equal to sin x. Y equal to sin x. This is the function and it is r to r. ये पुरानी बात है. 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि sin is a function r to r. When we draw the graph of sin function, we get like this. Domain of this sign is real numbers, codomain also real numbers, but the range is -1 to 1. -1 to 1. Sin, cos, tan, cot, etc. These are periodic function. Periodic function means the values are repeated, same values for different periods. If we continue the graph, we will get the same graph and the period is 0 to 2 pi. For a period of 2 pi, the value, the range is from -1 to 1. Same values are repeated from 2 pi to 4 pi, 4 pi to 6 pi, -2 pi to 0 and so on. Now, if I take fx1 equal to fx2, then x1 is not equal to x2 in case of sine. Sine of x1 equal to sine of x2, but x1 is not equal to x2. Many examples are there. You can take any example. Sine 0, when x1 is sine 0 is 0 and sine pi is also 0, but 0 is not equal to pi. It means function is not 1 pi. Also, its codomain R and range -1 to 1. We observe that codomain is not equal to range. It means this sin x
is not 1 1 and not onto. It is not bisective. So when the function is not bisective, its inverse does not exist, as we have seen in class in first chapter. पहले चैप्टर में ये देखा कि फंक्शन जो अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो साइन तो बाइजेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी हम चैप्टर बनाए बैठे हैं इसके ऊपर पूरा कि भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. हाँ, ये पीरियोडिक फंक्शन है. सिंस इट इज पीरियोडिक फंक्शन, its value is repeated, so we can restrict our function to certain intervals, and in that interval the function will be both 1 1 and onto. So if I take the range as -1 to 1 and domain as -π/2 to π/2 and define the function sin -π/2 π/2 to -1 1, then this all the values are included from the between -1 to 1 and domain -π/2 to π/2, means from this interval to this interval, this portion all the values are covered, and from -π/2 to π/2. Rest of the branches, this is one branch, -π/2 to π/2. If I take π/2 to 3π/2, this from this point to this point, again all the values will be covered -1 to 1. Then from 3π/2 to this 5π/2, means for every this interval -π/2 to π/2, π/2 to 3π/2, and so on, all the values between -1 to 1 will be covered, and the function will be both 1 1 and onto. When this function is both 1 1 and onto, means bisective, then its inverse exists, so we can define another function known as sine inverse. Sine inverse will be a function -1 1 to -π/2 π/2. This is known as principal value branch. The same satisfied for other branches also, but we generally consider this only principal value branch. And we know that f inverse of f is identity, x. So sine inverse of sine theta will be theta. Also f of f inverse is y. So sine of, here y stands for identity function, x stands for identity function, whatever variable is here it will be. So sine of sine inverse x will be x. Now when sine inverse of sine theta equal to theta, अगर हम ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि theta lies between -π/2 to π/2 for this principal value branch. The theta belongs to -π/2 to π/2. If theta is not between -π/2 to π/2, we cannot write sine inverse of sine theta equal to theta. In that case, first we will convert this sine theta in this interval. We will bring to this interval -π/2 to π/2. So in general, cos inverse of cos theta will be theta. For this, theta will lie between 0 to pi. So cos inverse function will be from, we know that for cos theta range is -1 1, and domain all real numbers for cos function. But again, cos function is also not 1 1, not onto, so we will change the principal value, we change the branch. So -1 1 to 0 pi. तो cos इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर दें डोमेन और कोडोमेन को. तो यहाँ कोडोमेन विल बी इक्वल टू रेंज, देयरफॉर इनवर्स ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट. ऐसे ही इसमें जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल हो जाता है तब इनवर्स एग्जिस्ट. सिमिलरली
tan inverse. So tan inverse will be R2 minus pi by 2 pi by 2. ये रेंज हमको याद रखनी है. कोसेक इनवर्स फंक्शन R minus -1 to minus pi by 2 excluding 0, because we know cosec x is 1 upon sin x and sin 0 is 0. So at 0 it does not exist or not defined. Sec inverse similarly R minus -1 to 0 pi excluding pi by 2. This is for sec inverse and tan inverse. And what inverse? R2 0 pi. This is for codomain and range for inverse functions. Now sin inverse of sin theta equal to theta, ये बात हो गई अपनी. cos inverse of cos theta equal to theta, इस रेंज में है. Similarly tan inverse of tan theta will be theta when theta lies between minus pi by 2 to pi by 2. cosec inverse बाकी के लिए डिफाइन कर सकते हैं. वैसे तो इनवर्स फंक्शंस में मटेरियल आपको बहुत मिलेगा, लेकिन यहाँ मैं बिल्कुल बेसिक चीज लेके चल रहा हूँ जिससे आपका जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो 12th क्लास में अपने को जितना एनसीईआरटी में गिवन है और जितना करना है तुमको, उससे बस थोड़ा सा और एक्स्ट्रा. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे. First is sin inverse of minus x equal to minus sin inverse x. Cos tan inverse of minus x equal to minus tan inverse x. Cosec inverse of minus x equal to minus cosec inverse x. Cos inverse of minus x equal to pi minus cos inverse x. Cot inverse of minus x is pi minus cot inverse x. Sin, tan, cosec, cos और रहेगा sec. तो sec inverse of minus x equal to pi minus sec inverse x. अब ये ध्यान रखने को कोई प्रॉपर्टी. This is to find the principal values. एक सिंपल वेरिफिकेशन देख लें. लेट साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू थीटा. जब हमने इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया, इसका मतलब इफ y इक्वल टू साइन एक्स, इट इंप्लाइज दैट x इज साइन इनवर्स y. अब जानते हैं कि f इज द फंक्शन a to b, y इक्वल टू fx, देन अनदर फंक्शन gy that is inverse. So similarly, that is x equal to g by x equal to g of y, that is sin inverse y. So if y equal to sin x, then x is sin inverse y, and conversely if x is sin inverse y, then we can write y equal to sin x. Now sin inverse of minus x equal to theta. If sin inverse y is x, then y equal to sin x. So we can write minus x equal to sin theta. Minus x equal to sin theta, or we can write x equal to minus sin theta. X equal to minus sin theta can be written as sin of minus theta. Sin of minus theta is x. What will be minus theta? Minus theta will be sin inverse x. Then what will be theta? Minus sin inverse x. And what theta is? So sin inverse of minus x is minus sin inverse x. This is for
Sin inverse of minus x. Similarly, the others can be verified. Now, one verification for cos, sec and cot. देखिए प्रोसेस वही रहना है, सेम. लेट cos inverse of minus x equal to theta. Let cos inverse of minus x equal to theta. Then minus x equal to cos theta, x equal to minus cos theta. When x is minus cos theta, it can be written as cos of pi minus theta. Then cos inverse x becomes pi minus theta. Or theta becomes pi minus cos inverse x. In place of theta we can put cos inverse minus x. It is pi minus cos inverse x. So cos inverse of minus x is pi minus cos inverse x. The others can also be verified by the same way. So this is your first property. On this basis you will be able to solve the problems of फर्स्ट एक्सरसाइज. एनसीईआरटी की जो अपनी पहली एक्सरसाइज है, बड़ी सिंपल प्रॉब्लम्स है उसमें, बहुत इजी. ये जो प्रॉपर्टी हमने बताई, इसके बेस पर आप उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. एक दो प्रॉब्लम है उसमें से देखो ले रहा हूं. सिंपल बिल्कुल प्रॉब्लम ले रहा हूं, बेसिक प्रॉब्लम्स जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है. फाइंड दी प्रिंसिपल वैल्यू. क्वेश्चन इज फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ minus half, say. Second, cos inverse of 1 by root 2. Third, tan inverse of minus 1. Now, अभी प्रॉपर्टी हमने लिखी थी, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या लिया था भाई हमने? साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स लिया था हमने, माइनस साइन इनवर्स एक्स. Minus sin inverse x, that is minus sin inverse. Now what half is? It is sin pi by 6. We will write the value in the given range. Sin inverse of sin theta equal to theta when theta lies between minus pi by 2 to pi by 2. ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू उसी रेंज में ऐसी लिखनी है हमको. Sin inverse of sin theta is theta, so it becomes minus pi by 6. Now with this cos inverse, since the value is positive, then we can write directly cos inverse 1 by root 2. 1 by root 2 is cos pi by 4. And we know that cos inverse of cos theta is theta. डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और कुछ बुक्स में ऐसे भी करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी सजेस्ट करते हैं कि y इक्वल टू cos inverse 1 by root 2 ऐसा ले लें. Then cos y equal to 1 by root 2. Then cos y equal to cos pi by 4. Then y is pi by 2. But advisable is to write like this. Tan inverse of minus 1. Tan inverse of minus x, अभी हमने प्रॉपर्टी लिख रखी है, minus tan inverse x. So it is minus tan inverse of 1. So minus tan inverse tan pi by 4. That is minus pi by 4. Suppose we are going to find sec inverse of minus 2. Now sec inverse minus x, sec inverse minus x पता है हमको, pi minus sec inverse x. So it is pi minus sec inverse 2. Pi minus sec inverse of 2. So sec 2, the value for sec is 2 when it is 60 degree, that is pi by 3. So pi minus sec inverse of sec theta is theta, that is pi by 3. अब जब भी मैं बोलूंगा ना कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो बार बार ये नहीं बता रहा हूं मैं कि थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. अंडरस्टूड है कि मुझे उस रेंज में लेना ही है. ऐसे ही मैंने कहा सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा इक्वल टू थीटा.
तो अंडरस्टूड है कि जो सेक के लिए रेंज हमने अभी डिफाइन की थी इससे पहले, उसी रेंज में एंगल लिखा हुआ तभी आएगा। तो पाई माइनस पाई बाई 3 दैट इज 2 पाई बाई 3। तो लाइक दिस फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी नंबर 1 अभी हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो बाय द टाइम आप इस एक्सरसाइज को, फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करें और एक और वीडियो में नेक्स्ट में बाकी इसकी जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस करेंगे और अगली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस और आगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लेंगे। अपना जैसे जैसे आपको टॉपिक्स आगे पसंद आते हैं आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि जब भी हमारा कोई नया आगे टॉपिक डालते हैं।